गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं नीता भुजवानी ज्ञान भारत में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सेल्फ मास्टरी वर्चुअल रिट्रीट अंतिम पड़ाव की ओर है। मन तो नहीं भरा क्योंकि ज्ञान की प्यास तो हर आत्मा को लगती है, पर चूंकि सिर्फ प्रदीप सर ने हमें सिर्फ 11 दिन की ही परमिशन दी है, तो हम भी बाध्य हैं। आज फिर से वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ धर्म बताएंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। 10 धर्म में से 3 धर्म, ध्यान धर्म, अहिंसा धर्म और स्नेह धर्म, हमको कल वो बता चुके हैं। आज उसके आगे के सेशन के लेंगे और जितना हो सकेगा हम धर्म को समझेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग को याद दिला दूं कि जो हमारी फिजिकल रिट्रीट होने वाली है बेंगलुरु में, उसमें काफी बुकिंग हो गई है, कुछ एक सीट ही बची है। तो हम लोग आप लोगों से को याद दिला रहे हैं कि अगर आप लोग जाने के लिए इच्छुक हैं तो कम से कम आप अपना नंबर और अपना नाम एनरोल करा दीजिए उस ग्रुप में, ताकि बाद में हमें तकलीफ ना हो, क्योंकि हमको भी पिरामिड वैली में उसके हिसाब से ही रूम्स बुक कराने हैं। तो आप लोग जितनी जल्दी करा सकते हैं करा लीजिएगा। नंबर दिए हुए हैं, और अगर आपको लग रहा है कि नंबर आपके पास नहीं है, आज भी मैंने पोस्ट किया है फिर से मैसेज को, तो मुझे, माही को, मानसी को, जिसको भी आपको करना है आप मैसेज कर दीजिए और आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और आप अपनी सुविधा अनुसार 1-2 दिन में पेमेंट करा सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि पेमेंट आज ही करनी है, 1-2 दिन में आप करा लीजिएगा। जितनी जल्दी हो जाएगा हमको भी क्लियर, हम भी पेमेंट उधर भेज के अपने रूम्स बुक करा लेंगे। बस इतना ही मैं आपको रिमाइंड कराना चाह रही हूँ। बाकी फ्रेंड्स, आप लोग के जो क्वेश्चन है वो उनके आंसर जरूर मिलेंगे जितना हो सकेगा। तो जब तक के फ्रेंड्स जुड़ रहे हैं तब तक के मैं आप लोग को याद दिला दूं कि ये जितने भी हमारे धर्म और उसके पहले जो डिजायर के ऊपर सर ने सेशन लिए हैं, उनके आप जरूर से नोट्स बनाइए, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि एक दिन हम ओपन प्लेटफॉर्म रखें, ताकि जो जितना समझ पाया है वो अपने एक्सपीरियंस के साथ उस सेशन में अपने को एक्सप्रेस करें। क्योंकि हम एक दूसरे से सीखते हैं, जरूरी नहीं है कि मेरे पास ही सारे अनुभव हों। हर आत्मा के पास अपने अपने अनुभव रहते हैं, पर एक दूसरे से हम बहुत जल्दी सीख लेते हैं। तो उस ओपन प्लेटफॉर्म में हम डिस्कस करेंगे कि जो सर ने थिंकिंग एंड डेस्टिनी का इतना सुंदर पार्ट निकाल के हमारे सामने लाए हैं, डिजायर और हमारे जो धर्मास हैं वो कैसे हमको प्रॉब्लम कर सकते हैं, हमारे लिए ऑब्स्टिकल बन सकते हैं, तो उसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। तो उसके लिए आप नोट्स बनाएंगे। बहुत लोग मुझे अपडेट करते हैं कि वो नोट्स बना रहे हैं, तो देखिए उनके में कितनी सिंसियरिटी है। ये नहीं कहूंगी कि आप नहीं है सिंसियर, पर बनाइए तो आपके लिए भी अच्छा है। ठीक है फ्रेंड्स, और सर के आते ही हम मेडिटेशन करेंगे 1 घंटा, उसके बाद जितना भी समय रहेगा हम ज्ञान लेंगे। नीता जी, कैन यू हियर मी? हाँ, सुन रही हूँ। आज फिर लास्ट डे कर लें क्वेश्चंस लेने का, ताकि जितने भी क्वेश्चंस फाइनली आए वो फ्रेम करके फिर आगे भेज दिए जाए। हाँ हाँ, बोल दो तुम। तो फ्रेंड्स, आप आज या कल तक एट द मैक्सिमम आप क्वेश्चंस भेज दीजिए, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस नहीं लेंगे, क्योंकि 2 ही दिन बाकी हैं। 2 ही दिन तो बचे हैं। तभी आपके पास तो काफी सारे क्वेश्चन है ना पूजा जी? काफी हैं। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि एक दिन क्वेश्चन आंसर करना है और एक दिन लाइव इंटरेक्शन करना है, तो अनफ क्वेश्चंस हैं, पर फिर भी अगर किसी का कोई कंपेलिंग क्वेश्चन है तो वो भेज दे। तो आज और कल सवेरे तक के आप लोग फ्रेंड्स भेज दीजिएगा, ताकि हम लोग लिस्ट पूरी रेडी कर सकें,
क्योंकि सर ने मुझसे कहा है कि ये वाला टाइप्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ धर्मा खत्म होने के बाद मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर ही देना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग को काफी कंफ्यूजन हो रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, पूजा जी कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 20? मेरे ख्याल हमारे पास इस समय करीबन 28 क्वेश्चंस हैं। इसके लिए तो सर का 5 दिन लगेगा। तो आप ही लोग रिक्वेस्ट करिए, जब सर ज्ञान दे लेते हैं ना, तो उसके बाद आप ही लोग चैट बॉक्स में लिख के बोलिए कि सर इंक्रीज 2-3 days मोर, क्योंकि 1 जुलाई को तो वो नहीं निकल रहे हैं, पता नहीं कौन सी जुलाई को निकल रहे हैं, तो आप ही लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। Sounds like a plan। मेरे ख्याल सारे लोग हम लोग कर देते हैं आज कॉपी 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 कॉपी। सर एक्सटेंड, सर आ गए हैं, सर आ गए। नमस्ते सर, वेलकम वेलकम टू ज्ञान भारत। Namaste all. So let us start the meditation. Yes. Drink some water. Close your eyes. Sit comfortably. And let us start the meditation.
10 seconds. Gently place your hands on your eyes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. You may slowly open your eyes whenever you're ready. Drink some water. Stretch yourself. Relax your body. So we were discussing about the types of karma. We have seen the 3 types yesterday, so we'll continue with that. Whenever you're ready, you can take your book and pen. थैंक यू सर. फ्रेंड्स, सर कह रहे हैं कि तुरंत आप इसके बाद पानी पी लीजिए और अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेना, और उसके बाद आप जैसे भी आपको ठीक लगे उसके तुरंत बाद आप कॉपी पेन लेकर तैयार रहिएगा. So yesterday we have seen Dhyana Dharma, Ahimsa Dharma, and Sneha Dharma. Today we go to the 4th one, which is Karuna Dharma. Karuna means compassion. To help somebody who is in emergency, who is in need. That is your duty. What you can afford to do when somebody is in need and emergency. You have to always do it. To be Karuna simply means to be considerate to others. You are very considerate. You are accommodating to others. You consider others' viewpoint. So again, when it comes to Karuna Dharma, we should help the people who are either in emergency or in need. It is not your duty to help somebody who is in greed. When somebody is in need, you help them. But if somebody is greedy, then you don't help them. It's not your duty. For example, somebody is in debts. They have used their money unwisely, buying a lot of fancy items, expensive items, and they got into debts. So it is not your duty to help them, because they have taken that loans. They have to learn the lesson, how to use the money properly. So it is their lesson. You don't need to help them. But if somebody is in emergency, somebody is in need to pay immediately their children's education or exam fees, it is in need. So you can help them. So you should have a clear distinction that your help should always enable another person, motivate another person, support another person. Your help should not make another person lazy. Your help should not make another person greedy. That is also your dharma. So you have to be careful who to help, whom not to help. But in emergency, you should always help. And whatever you have, you share it. If you don't have, then you cannot. So don't overdo it, which you cannot do it. But what you can, you have to always support others. Every moment, every opportunity, always be compassionate, always be considerate.
You should not be self-obsessed with yourself. When you are self-obsessed, then you are in adharma. If you are considering others, then you are in karuna dharma. A classic example in Mahabharata is when Bhishma was laid down with arrows by Arjuna. He cannot even move his body. His body is full of arrows. So at that time, Dharmaraja goes to him. And even though Bhishma was in pain, full of arrows, so Bhishma spoke about Rajaniti to Dharmaraja. Even though he is in pain, he shared whatever he has to share because he is compassionate. He is compassionate to help Dharmaraja for the right cause. Even Jesus Christ, who was getting crucified, even at the time of crucifixion, he was very compassionate. So he prayed, "Oh Lord, please forgive them. They don't know what they are doing." So he was very compassionate. So compassion, you should always learn from Jesus Christ. Even at the time of crucifixion, he was compassionate to the very person who is crucifying. So this is karuna dharma. Yes, ma'am. सर ने कहा कि कल हमने 3 धर्म के बारे में बात की थी, ध्यान धर्म, अहिंसा धर्म और स्नेह धर्म। चौथा धर्म करुणा धर्म है, अर्थात कंपैशन। ये इमरजेंसी के लिए है या किसी की जरूरत के लिए है। जो भी तुम किसी दूसरे के लिए कर सकते हो हमेशा करो। करुणा दूसरों के बारे में सोचा जाता है जब हम किसी को मदद कर सके। दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को हम जब देखते हैं और उनकी जरूरत को हम महसूस करते हैं, तभी हम करुणावश उनकी हेल्प करते हैं। और हमको हमेशा किसी की जरूरत और उनकी इमरजेंसी में आपको मदद करना चाहिए। ये आपके धर्म नहीं है, पर उनकी ड्यूटी, पर उनकी जरूरत है तो आप हेल्प करिए। पर यदि कोई लालच कर रहा है तब आप उसकी बिल्कुल भी मदद मत करिए। एग्जाम्पल के तौर पे यदि कोई व्यक्ति बहुत कर्ज में डूबा हुआ है क्योंकि उसने अच्छे से धर्म नहीं निभाया, अपनी इच्छाओं और वासनाओं के कारण महंगी महंगी चीजें खरीद के कर्ज में डूब गया है, तब आप उसकी मदद मत करिए। ये उसका पाठ है, उसे पढ़ने दीजिए। पर यदि किसी व्यक्ति के बच्चों की फीस या पढ़ाई की समस्या आ रही है, उसे इमरजेंसी है पैसों की, तब आप जरूर उसकी मदद करिए। हमारी मदद हमेशा लोगों को मदद करने के लिए, उनको मोटिवेट, प्रेरित करने के लिए होनी चाहिए, पर उनके लेजीनेस को बढ़ाने के लिए नहीं, उनके आलस्य को बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए, और ना ही उनके लालच को बढ़ाने के लिए होना चाहिए। ये धर्म है कि आप ऐसे कोई भी चीजों के लिए प्रोत्साहन मत करें। इमरजेंसी में हमेशा आप हेल्प करिए, जो भी आपके पास है उसे बांटिए, और यदि आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल भी अपने से अधिक, अपनी सीमा से अधिक मत करिए। हर क्षण, हर अवसर का लाभ उठाइए। कंपैशन के लिए हमेशा सोचिए कि आप किसी की कैसे मदद कर सकते हैं। दूसरों की मदद नहीं करना अधर्म है। दूसरों के लिए सोचें और हम मदद करें तो वो करुणा धर्म है। एक और एग्जाम्पल मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि महाभारत के समय में जब भीष्म पितामह तीर की शैया पर सोए हुए थे, वे अपने आप में हिल भी नहीं पा रहे थे, वो बहुत ही दर्द में थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर उनके पास गए थे। वे कुछ राजनीति के बारे में उनसे डिस्कस करना चाहते थे। वो बहुत दर्द में थे, पर फिर भी वो करुणावश धर्मराज को सब कुछ बताए। जीसस भी जब सूली पर चढ़ रहे थे, तभी भी उनका सबसे बेहतरीन उदाहरण है करुणा का, क्योंकि वो महाकरुणावान थे। वे तब भी प्रेयर कर रहे थे कि हे ईश्वर, उन्हें माफ कर देना, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। वे अपराधियों को ही क्षमा करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। तो अगर आपको करुणावान बनना है तो आप जीसस से सीखिए,
जो क्रूसिफाइड होते समय भी अपने धर्म को नहीं छोड़ रहे थे। So now the next is Shanti Dharma. Shanti means peace. Now, when it is Shanti Dharma, you have to refer to your mind. Your mind has to be in peace all the time. Unless you are peaceful, you cannot understand what to do, what not to do. Only a person who is really peaceful, relaxed, he can do his best. In any situation, to take very important decisions, the mind has to be in peace. So it is our duty to be in peace. It is our dharma to keep the mind to be in peace. If you are not peaceful, you cannot understand what is dharma. What to do, what not to do. You cannot understand. At any given point, you cannot understand what to do, what not to do. If you cannot understand, then you cannot take action. So, Shanti Dharma is very, very essential for the execution of Dharma. Every moment, you have to practice this peace. You have to tell yourself, okay, cool. You have to be cool babies all the time. And in any given situation, whatever happens, tell yourself, it's okay. It's okay, fine. I'm going to be cool. If somebody scolds you, if somebody is angry at you, somebody scolds you, don't react. When it comes to Shanti Dharma, that means there should be no reaction. You should respond to the situation. Any given situation, you should never react. You should respond. If you are not reacting and responding, then you will be able to do the right thing. A great example is Gurjeev. When Gurjeev was around 11 years old, his father was on the deathbed. So before his father vacated the body, his father wants to give one advice to Gurjeev, which will help Gurjeev to become enlightened. So Gurjeev's father called him before he vacated the body. He called him and said, I'm leaving you too early. I'm leaving you as a small boy. But I want one promise from you. You promise me that in your life, if anybody scolds you, if anybody is behaving bad with you, you don't respond for 24 hours. Whatever you want to do, you have to do only after 24 hours. So this is the promise. He got it. So that means he was saying, don't react immediately. For 24 hours, you have to be cool. You have to be in Shanti. And whatever the reaction you do after 24 hours, that means by the time the anger is no more there, you are already in Shanti. So then you respond to the situation. So this is the great advice Gurjeev's father gave, and Gurjeev practiced it all his lifetime. An enlightened person doesn't react. He responds. If you want to check yourself if you're enlightened or not, then this might be the litmus test. In any given situation, you are always cool. You are always in Shanti. And you are not reacting. You are always responding. That means you are enlightened. This is the litmus test. When you react, you lose a lot of energy. So when you lose energy, then you become out of balance. Then the emotions take over you. You are no more the master. So Shanti Dharma is very, very important Dharma that we have to practice every moment within our family and in our workplace, in the society, everywhere. So then only when you practice peace, Shanti Dharma within you, then that reflects
in the society, then that reflects on the planet Earth. Then there will be peace on the planet Earth. सर ने कहा है कि अगला वाला जो धर्मा है वो शांति धर्मा है, अर्थात पीस। पीस का यहाँ पर मैं अर्थ ले रहा हूँ मन को शांत रखना। जब तक कि आप अपने मन को शांत नहीं रख पाएंगे तब तक कि आप नहीं समझ सकते कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। यही एक शांत मन ही सर्वोत्तम अपने जीवन का काम कर सकता है। तो आपका कर्तव्य है कि आप अपने को शांत रखें। जब आप शांत होंगे तभी आप अपने धर्म का पालन कर पाएंगे, अर्थात धर्म का कार्यान्वयन आपके शांत मन के अनुसार ही होगा। हर क्षण अपने को शांत रखें, अपने आप को शांत बच्चे के समान ही याद दिलाएं। यदि कोई चीज हो भी रही है आपके अनहित में या आपको बुरा लग रहा है, तब भी आप अपने आप को बार बार दोहराइए कि ठीक है, ये सब ठीक है और मैं अपने आप को शांत रखूंगा। कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करिए, यही शांति धर्म है। आप रिएक्ट मत करिए, प्रतिक्रिया मत करिए, परंतु अपने उत्तरदायित्व को लेकर रिस्पॉन्ड जरूर कर सकते हैं। तभी आप सही काम कर रहे हैं। गुरुजीएफ के जीवन की एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि जब वो 11 साल के थे और उनके पिताजी शरीर छोड़ रहे थे तो उनको बुलाकर उनको कहा था कि मैं तुमको छोटी उम्र में छोड़ के जा रहा हूं, पर एक सलाह दे रहा हूं और तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि आप उसको आजीवन फॉलो करोगे। और ये जो प्रॉमिस था यही गुरुजीएफ को एनलाइटन बनाने में मदद किया। उन्होंने कहा है कि आप जो भी तुम्हारी जिंदगी में कोई कुछ डांटेगा या कोई आपको गलत चीज बोलेगा तो आप 24 घंटे अपने आप को चुप रखना। उसके बाद तुमको अगर जवाब देना है तो 24 घंटे के बाद जाकर जवाब दे देना। ये 24 घंटे में तुम्हारा जो रिएक्शन है वो रिस्पॉन्ड में बदल जाएगा, तुम शांत हो जाओगे और सही जवाब दे पाओगे। एनलाइटेड पर्सन कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करना हमारा ये लिटमस टेस्ट है। आप अपने आप को अंदर झांक के देखिए कि यदि आपको कोई चीज बुरी लगती है तो क्या आप तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं या सोच समझ के अपना उत्तरदायित्व लेते हुए रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आप रिएक्ट करते रहेंगे तो अपनी एनर्जी को गंवाते रहेंगे, आपका संतुलन खो जाएगा और आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। इसीलिए शांति धर्म बहुत जरूरी है। हर क्षण जब आप परिवार में हो या अपने कार्यस्थल में अपने काम को कर रहे हो, ऑफिस वगैरह में, जहां पे भी आप हो, हर क्षण हर समय इसका अभ्यास करिए, अपने आप को शांत रखिए। इससे आपको दिखेगा कि आपके आसपास की पूरी सोसाइटी भी आपको वैसे ही प्रतिबिंबित करेगी। आप शांत होंगे, सोसाइटी भी आपके आसपास की शांत होएगी और इस तरीके से पृथ्वी भी शांत हो जाएगी। So the next is Arogya Dharma. So when we say about Arogya, which means health, here the health refers to the holistic health. So we have a duty to take care of our health, Arogya Dharma. It is our duty, it is our responsibility. When I say health, it means holistic health, health of your body, health of your emotions, your psychological health, your emotional health, and also your spiritual health. So how can we have a complete health in our well-being? Is when you practice middle path. So that means you have to be 50% spiritual and 50% physical. We are living in the physical body, on the physical world. So whatever the body needs are, it has to be taken care. It is our duty. The more enlightened you are, the more sensitive you will be to the body. How to be sensitive to the body? For example, you feel like sleeping, then you should give rest to the body. You should sleep. You feel tired, then you should give rest. You don't feel like eating, then you should not eat. What you should be, the more sensitive you become, the more enlightened you are.
So this sensitivity comes when you have the spiritual health. Physical health depends on the spiritual health. Spiritual health means you are always having miraculous thinking. There is no negativity in your thoughts, in your thinking. And you don't compromise your health for the sake of don't compromise your physical health for the sake of your spiritual practices. And you don't compromise your spiritual practice in the name of physical health. So this holistic health is only possible for meditators. For non-meditators, the holistic health is not possible. But the most important point to understand is your physical body is very precious and you have to take care of it very carefully. You should not give too much food. If you give too much food, then you are in adharma. Some people overeat, then they are doing adharma towards their own body. How much ever is your hunger, you should only eat to that much. And at the same time, you should not go on indefinite fasting and trouble your body. When you are going for a detox retreat, for 10 days, you have a detox plan. For 10 days, you are not taking food, you are on juices. That is perfectly fine. But the whole life, you want to trouble your body, that is adharma. So how much relaxation you should give? You cannot relax too much. If you relax too much, then you are in adharma. If you relax too little, then it is also adharma. If you sleep too much, then you are in adharma. If you sleep too little, then you are in adharma. If you are overworking, then you are in adharma. And you are lazy and not at all working, you are underworking, then also you are in adharma. So this Arogya Dharma relates to perfect balance. When you take care of your body, it should be perfect, middle, balanced. How much sleep you want, you give that much sleep. How much hunger you are, you take that much food. How much relaxation you need, you take that much relaxation. Some people, they focus too much on materialistic things, especially business people. They keep on earning money. They are so much tied up. They don't rest their physical body properly. They don't eat food time to time. So that means they are in adharma. They have to pay the consequences. If your physical body is not healthy, then you cannot do great spiritual sadhana also. For your spiritual sadhana to reach greater heights, your physical body has to be healthy. Your psychological health, emotional health also should be healthy. And your emotions and your emotional health, your psychological health comes into balance only when you make your life 50% physicality, 50% spirituality. And to take care of your body, you see, we are not our bodies, but we live in our bodies. So this, to take care of the body, is in between. It is in between Swadharma and Paradharma. It is not exactly Paradharma, it is not exactly Swadharma. It is in between. To take care of yourself is Swadharma. To do meditation is Swadharma, because we are Atma. But to take care of the body is in between. It's like both. It is Swadharma and also Paradharma, both. So it is very important. Okay. अगला वाला धर्म के बारे में बता रहे हैं कि आरोग्य धर्म अर्थात स्वास्थ्य रहने के ऊपर है. होलिस्टिक हेल्थ अर्थात संपूर्ण स्वास्थ्य. इसमें हमारे तीनों, हमारी बॉडी, हमारे इमोशंस और हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ सम्मिलित हैं. साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली हम पूरी तरीके से जब फिट रहते हैं तभी हम अपने आप को होलिस्टिक हेल्थ प्राप्त करें हैं, ऐसा कहते हैं. तो इसे कैसे प्राप्त करेंगे? जब आप 50% अपने सारे संसार को, शारीरिक को, और 50% अपने स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करके चलेंगे.
हम बॉडी नहीं है, पर हमारे बॉडी को जो भी जरूरत है, क्योंकि हम उसमें रहते हैं, तो जो भी उसे जरूरत है उसे हमें देना चाहिए। जितना ज्यादा आप मेडिटेशन करेंगे, एनलाइटेंड होते जाएंगे, उतना ही अपने शरीर के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते जाएंगे। अगर आपको नींद आ रही हो, यदि आप थक गए हो, तो आपको पर्याप्त रूप से उसे आराम करने देना चाहिए। अगर उसे भूख नहीं लग रही हो शरीर को, तो भी आप खा रहे हैं, तब आप गलत कर रहे हैं। तो अपने शरीर के प्रति संवेदनशील रहिए कि उसे क्या चाहिए। जब स्पिरिचुअल हेल्थ होगी तभी हमारी, मतलब जब आप अच्छे से साधना वगैरह कर लेंगे, मेडिटेशन वगैरह करेंगे, तभी आपकी फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य आपको अच्छा मिलेगा। और जब आपकी शारीरिक शरीर अच्छा होगा, तभी आप अच्छे से ध्यान वगैरह सब कुछ कर पाएंगे। तो कैसे हम अपने को स्पिरिचुअल हेल्थ को अच्छे से करें, तो आपको हमेशा अपनी थिंकिंग को मिराकुलस बना के रखना है। कोई भी आपके विचारों में नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। स्पिरिचुअल हेल्थ अगर अच्छी होएगी, अर्थात हम ध्यान अच्छे से करेंगे, तो शरीर भी स्वस्थ, और शरीर स्वस्थ तो हम ज्यादा ध्यान कर पाएंगे। जो मेडिटेटर होता है, उसी के लिए एक संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करना संभव होता है। शरीर बहुत कीमती है, उसका बहुत ध्यान रखना है आप सभी लोगों को। इसको कुछ भी ज्यादा खाने के लिए मत दीजिए। अगर ज्यादा खाते हैं तो वो अधर्मा है। जितनी भूख है उससे थोड़ा कम ही खाइए। बहुत ज्यादा टाइम तक के आप फास्टिंग मत करिए। कई लोग बहुत टाइम तक के फास्टिंग रखते हैं, उसके लिए सर कह रहे हैं कि जैसे 10 दिन या 15 दिन अगर आप थोड़े टाइम के लिए रखते हैं, जूसेस पे रहते हैं, तब वो ठीक है। पर बहुत ज्यादा अपने शरीर पर अत्याचार मत करिए, तब वो अधर्मा रहेगा। वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा आराम भी नहीं करना है और बहुत कम आराम भी नहीं करना है। बहुत ज्यादा नहीं खाना है, बहुत कम भी नहीं खाना है। बहुत ज्यादा काम नहीं करना है और बहुत कम भी काम नहीं करना है। ये सभी जो हम अति में चले जाते हैं, कम या बहुत ज्यादा मैक्सिमम में, वो सभी अधर्मा है। तो आपको खुद तय करना है कि आपको कितना सोना है, कितना खाना है, कितना अपने शरीर को आराम देना है। कई लोग इतना संसारिक भौतिकवाद में फंस जाते हैं कि पैसे कमाने की चाह में वो खाना पीना और ठीक से सोते भी नहीं हैं। इसके कारण उनको परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जब शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा, तो वे अपने मेडिटेशन या दूसरे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को नहीं कर पाएंगे। तो अपने इमोशनल, साइकोलॉजिकली, फिजिकली अपने आप को हेल्दी रखिए। और ये तभी संभव होगा जब आप 50% संसार के प्रति, अर्थात अपने शारीरिक, और 50% स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के प्रति डिवोटेड रहेंगे। तो आप अपने शरीर का बहुत ख्याल रखिए। हम शरीर नहीं है, पर हम इसमें रहते हैं। तो जो शरीर का ध्यान रखने की जो चीज है, वो स्वधर्मा और परधर्मा के बीच का संतुलन है। ठीक है सर। Okay. So then comes Ahara Dharma, which is also part of Arogya Dharma, but I made it as a separate Ahara Dharma. What kind of food you take, that's also your duty to make sure you take the right kind of the food. We all have different body types. Some people are Vata. You know the combination in Ayurveda: Vata, Pitta, Kapha. Vata has more air element. Their body structures are very slim. Pitta has more fire element, and their bodies radiate a lot of fire, and they get digested. And they are prone to a lot of emotions, Pitta. And Kapha people, they are a little bit, their body is a little stout. So they're different types. This is an Ayurveda. I think most of you know it. I don't need to go in detail. So you have to understand what body type you are, and we have to take that kind of a right food. The most important when I say the right food is, it should not be the food of violence, pain, and suffering. Suppose if you are going, no pain, no violence is a vegetarian food. But when you are buying those vegetables from the market, when the farmer is selling, you should happily pay for whatever he is asking. You cannot bargain
too much and make the seller go into loss, or he sells out of pain. Just because he's a poor farmer, you cannot exploit him. Just because he's an uneducated roadside trader, you cannot exploit the situation. So there should be no exploitation, suffering, pain. When you're buying the food, you should buy the food very happy, without bargain, pay the right amount, and cook the food happily, so that the seller is happy, the farmer is also happy. And organic food, don't take the food which is grown with a lot of pesticides, chemicals. Try to take organic food. And no cooked food in the fridge. This is also very important. If you want to be sensitive and you want to go spiritually to greater heights, then you should make sure that you take care of the food also. Food is very important. Cooked food should never go into the fridge. You can keep vegetables, fruits, milk, all those things. But once the food is cooked, it should be consumed within 3 hours. Then it has the maximum energy. Cooked food should never go into the fridge, and no microwave oven. When you cook the food using microwave oven, the microwave energies are very destructive energies, and it is more harmful to your health. And no garlic. Garlic is a spy. The more it's a spy, it belongs to the dark forces, but it is being given with a lot of good qualities. Like, if you eat garlic, it's good for your stomach, it's good for your heart, it's good for many, many things. But garlic, when you eat garlic, it motivates you to eat meat. For example, if you're a meat eater and you become vegetarian after coming into meditation, so the more you eat garlic, the more it motivates you to eat meat. Number one. And number two, the more you eat garlic, the more you start developing the fear consciousness within you. Because the more you consume garlic, the more it calcifies the pituitary glands and the pineal glands. And these two are master glands, our 6th and the 7th chakra. When the pituitary and the pineal glands are calcified, then the amount of light which you receive gets minimized. Where there is a lack of light, there is more fear. Light means trust, faith. So when there is a lack of trust, then you have more fear. And the other most important is you have to consume more fruits. Your diet should have at least every day on an average, your diet should have at least 30 to 40% fruits minimum. The more the fruits, the better. And also you should alternate your food styles. For example, one day you are eating solid food, one day you eat liquids, one day you eat fruits. So you break the routine so that your body naturally goes into a detox mode. And once in a week, compulsory fasting. One day per week, you do compulsory fasting. That helps in your body absorbs more nutrition from whatever the food you are eating. Your body goes through a natural detox. So when you're doing fasting, you can take juices, more water, more juices, but you are not taking any solids. So you are giving rest to your digestive system. And energize the food, whatever the food you are eating. Use pyramids to energize the food. You can keep the fruits, vegetables, grains, keep it inside the pyramid for 1 day, 2 days. And then you cook the food, it has more energy. And eat the food of the highest quality, highest taste. The more tasty you cook the food, the more energy it has. And finally, no alcohol. Don't consume alcohol. It affects your spiritual journey. It damages your physical health. And it also affects your spiritual journey. Okay. So you have to be very careful when it comes to your consumption of food. So this is Ahara Dharma.
अगला वाला सर ने कहा है कि आहार धर्म होता है। आहार मतलब जो भोजन हम करते हैं, तो हमें कैसे खाना खाना चाहिए? हमें बिल्कुल सही तरीका का खाना खाना चाहिए। हम सबके शरीर अलग अलग प्रकार के होते हैं, वात पित्त कफ। जो वात वाले होते हैं उनके में एयर एलिमेंट ज्यादा होता है, वो पतले होते हैं। और जो पित्त वाले होते हैं उनके में फायर एलिमेंट ज्यादा होता है, उनके में इमोशंस बहुत ज्यादा हावी होते हैं। कफ वालों की बॉडी थोड़ी मोटी रहती है। और ऐसे आप सब लोग इन तीनों शरीरों के बारे में जानते हैं जो आयुर्वेद ने बताए हैं। तो आप सबसे पहले अपने शरीर का टाइप पता करिए कि वो किस टाइप का है, वात का है, पित्त का है या कफ का है। उसके अनुसार ही आप आहार लीजिए। फिर दूसरा आपका मुख्य बात है कि आपके खाने में कोई भी हिंसा वाले फूड नहीं होना चाहिए, अर्थात नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और वेजिटेरियन अगर फूड ले भी रहे हैं तो आप देखिए कि आप जब जाते हैं मार्केट में और जिस भी व्यापारी से खरीदते हैं, जिस भैया से खरीदते हैं आप, उसको आप खुशी खुशी पैसे दीजिए। आप बहुत ज्यादा बार्गेन करके उसके दुख में, उसकी मजबूरी का फायदा मत उठाइए, क्योंकि वो भी एनर्जी उस फूड में आती है। तो जब आप सब्जियां खरीदें तो एक खुशी मन से, एकदम अच्छे मन से आप खरीदें, ताकि वो सेलर भी खुश रहे और उसके द्वारा फार्मर भी खुश रहे। तो आपको खाना बिना सब्जी अच्छे मन से खरीद के लानी है और उसे बहुत ही अच्छे प्यार पूर्वक तरीके से पकाना है। वेजिटेबल्स में बहुत सारे पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड होते हैं, तो हो सके अगर आपके पास संभव हो तो आप ऑर्गेनिक फूड खरीद कर खाइए। और खाना पका लेने के बाद फ्रिज में इसे बिल्कुल भी मत रखिए। आप कच्ची सब्जियां और दूध को फ्रिज में रख सकते हैं, पर यदि खाना आपने पका लिया है तो 3 घंटे के भीतर उसको खा लीजिए। और माइक्रोवेव को बिल्कुल भी आप यूज मत करिए, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो विनाश करती है उसके एनर्जी को, फूड की एनर्जी को, और इसके कारण आपके स्वास्थ्य में फर्क पड़ता है। साथ ही आप ध्यान रखिए कि लहसुन का उपयोग बिल्कुल भी मत करिए, ये डार्क फोर्सेस के द्वारा बनाई गई है। आप सभी लोग जानते हैं कि लहसुन में बहुत सारे औषधि गुण हैं, इसीलिए लोग अट्रैक्ट होते हैं कि हमारा पेट अच्छा रहेगा, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, हमारे हार्ट के लिए अच्छा है। पर ये औषधि गुणों के बावजूद इसको आप बिल्कुल भी मत करिए, खाइए, क्योंकि ये आपको, अगर आपने थोड़े समय पहले ही मांसाहार को छोड़ा है तो ये आपको मांसाहार के प्रति बहुत इच्छा भी पैदा करेगा। पहला पॉइंट है कि आपको नॉनवेज के प्रति प्रेरणा देगा। और दूसरा कि ये आपके में डर पैदा करता है। जैसे आपके में डर ज्यादा बढ़ते जाता है, आप कॉस्मिक एनर्जी अर्थात लाइट एनर्जी को कम एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि ये जो गार्लिक है वो आपके 6th और 7th चक्रा के जो मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड, उन दोनों को कैल्सिफाइड कर देता है, इसीलिए लाइट एनर्जी कम आती है। लाइट का अर्थ है ट्रस्ट और फेथ। तो जितना आपके में ये कम होते जाएगा, लाइट यानी कि ट्रस्ट फेथ कम होते जाएगा, उतना आपके में भय, डर बढ़ते जाएगा। और साथ ही अपने आहार में सबसे ज्यादा फ्रूट्स को शामिल करिए। कोशिश करिए कि प्रतिदिन आप कम से कम अपने भोजन में 30 से 40% तक फ्रूट ले रहे हों। उससे ज्यादा भी ले सकते हैं और अच्छा है। और आप एक ही समान रोज भोजन मत करिए, आप उसमें थोड़ा सा बदलाव लाइए, अल्टरनेट तरीके से करिए कि एक दिन आप सॉलिड खाना खा रहे हैं, एक दिन सिर्फ लिक्विड पर रहिए, और एक दिन आप बिल्कुल भी कुछ, और एक दिन हफ्ते में कम से कम एक दिन सॉलिड खाना है, एक दिन लिक्विड लेना है और एक दिन सिर्फ फ्रूट्स लेना है। इससे आपका शरीर डिटॉक्सिफिकेशन मोड में चला जाएगा। और हफ्ते में एक दिन आपको उपवास रखना अनिवार्य है। अगर आप एक दिन उपवास रखते हैं तो आपका शरीर और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, ज्यादा पोषण लेने के लिए तैयार हो जाता है और डिटॉक्सिफिकेशन अच्छे से होता है। जिस दिन आप उपवास रखें उस दिन आप जूस ले सकते हैं, पर सॉलिड फूड कुछ भी नहीं लेना है, इससे आपकी बॉडी एनर्जाइज्ड हो जाएगी। हो सके, संभव हो सके तो आप अपने फ्रूट और वेजिटेबल्स को पिरामिड के नीचे आप रखिए 1 या 2 दिन के लिए। इसके द्वारा वो ज्यादा एनर्जी वाले खाद्य पदार्थ बन जाएंगे। और जब आप खाना बनाते हैं तो बहुत ही प्रेम पूर्वक और बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाइए। जितना स्वाद रहेगा उतनी ही एनर्जी रहेगी।
और आखिरी में आपको बिल्कुल भी अल्कोहल का उपभोग नहीं करना है। अल्कोहल आपके फिजिकल हेल्थ को तो खराब करती ही है, पर उसके साथ ही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी बाधा डालती है। तो आप अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं, इन सब के लिए आप बहुत ज्यादा सचेत हो जाओ, क्योंकि आहार हमारे एक मुख्य भूमिका निभाता है हमारे जर्नी में और हमारे हेल्थ में। थैंक यू। So next comes Swadhyaya Dharma. You have to read books. We are multidimensional beings, and we are multi-bodied beings. We live simultaneously in many, many dimensions. So unless we read books like Seth, unless we read the Seth books, or unless we read the books like Thinking and Destiny, if you don't read these books, then we don't understand our multidimensional beingness. Books are very important. You see, you can attend a Swadhyaya series. I can also quote a lot of things from the book Thinking and Destiny, but what I can give is only the essence. But when I speak about certain book, my intention is to motivate you to read that particular book. Because unless you read the book, you will not be able to capture the entire essence of the book. And the more you read books, the more your life matures. Your maturity and your understanding of life comes by reading books. It can be audiobooks or ebooks or physical books, physical copy, hard copies. But you have to have the habit of reading books. It is your duty. Swadhyaya Dharma follows for a meditator. Once you are in the spiritual path, it is your duty to read the books. If you don't read the books, for example, you are doing meditation and you are not reading the books, then you are in adharma. So when you are in adharma, then naturally, still you will go through some suffering in life. So reading books is very, very important, especially for a truth seeker. The maturity, your life matures only by reading books along with meditation. This is Swadhyaya Dharma. Kriya Yoga, Patanjali Maharshi has described as Kriya Yoga. What is Kriya Yoga? Kriya Yoga is nothing but Tapaha, Swadhyaya and Ishvara Pranidhana is Kriya Yoga. When you practice tapas, and when you practice Swadhyaya, and when you Ishvara Pranidhana, when these three things are there, that means you are following Kriya Yoga. Tapaha, Swadhyaya, Ishvara Pranidhana is Kriya Yoga. What is tapaha? Tapaha means you reduce your sleep, you reduce your talk, you reduce your food intake, you reduce your expectations from others, you reduce your mental thoughts through meditation, and you reduce this me and mine, the ego, you reduce it, you consciously reduce. So that means you are in tapas. So by reducing these things, you are focusing more on meditation. So this is tapaha. And then Swadhyaya. Swadhyaya means reading books. Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana means you see everybody as God. You see the godliness in everybody. Ishvara Pranidhana. You see God in every creature. You see God in every living being. So when you are able to do this, then you are practicing Kriya Yoga. So without Swadhyaya, there is no Kriya. There is no Kriya Yoga. So Swadhyaya is very, very important. So this is Swadhyaya Dharma. You might be listening to others sharing of their reading. There are a lot of Swadhyaya series happening in these days in many online YouTube videos. You might listen and don't get into the illusion that you understood the book. Unless you yourself read the book, you are incomplete in the understanding. Okay.
बहुत ही सुंदर धर्म के बारे में बता रहे हैं, जिनके बारे में हम लोग भी आप लोगों को बार बार रिमाइंड करते हैं। स्वाध्याय धर्म अर्थात आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ना। हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग है, बहुआयामी प्राणी हैं हम, और हमारे पास बहुआयामी शरीर भी है। तो हम सभी को सेठ मास्टर्स और पर्सिवल की थिंकिंग एंड डेस्टिनी जैसी बुक्स को पढ़ना चाहिए। जब तक कि हम ऐसी पुस्तकों को नहीं पढ़ेंगे, हम अपने बहुआयामी अस्तित्व को नहीं समझ सकते। आप लोग, बहुत सारे लोग स्वाध्याय सीरीज को देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं, उसका पूरा सार लेते हैं कोई भी पुस्तक का। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने वो बुक पढ़ ली। मैं कोई बुक का कुछ एसेंस, उसका सार बताता हूँ तो मेरी इच्छा रहती है कि मैं आपको प्रेरित करता हूँ कि आप पूरी बुक को पढ़ें। इस एसेंस के द्वारा आप और प्रेरित हों पढ़ने के लिए। आपको ज्यादा से ज्यादा बुक पढ़नी चाहिए, इससे आपके में प्रौढ़ता भी आएगी और जीवन के प्रति आपकी समझ भी बढ़ेगी। जितनी ज्यादा बुक्स पर, कोई भी बुक्स किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं, खरीद कर, या सॉफ्ट कॉपी आपके पास हो, ई बुक्स, किसी के द्वारा भी आप बुक पढ़िए, पर बुक पढ़ना आपके लिए धर्म है। और खासकर जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो ये आपका धर्म है कि आप अच्छी पुस्तकें पढ़ो। और यदि आप आध्यात्मिक पुस्तकें नहीं पढ़ रहे हैं एक ध्यानी होने के बावजूद, तो आप अधर्म में हैं। आपको फिर से इस संसार में आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे सत्य आप नहीं समझ पाएंगे। तो जो सत्य के राही हैं उनके लिए आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि वो उनका जीवन और प्रौढ़ हो सके। पतंजलि ने भी क्रिया योग के बारे में कहा है, जिसमें तपह, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान के बारे में बोला है। इन तीनों को जो कोई फॉलो करता है वो त्रियोग क्रिया कर रहा है। तो तप का अर्थ है कि आप अपने बातचीत को कम करें, नींद को कम करें, अपने खाने को कम करें, अपने विचारों को कम करें, अपने अहंकार, जो भी चीजें आपके में हैं, उन सभी चीजों को आप सचेतन रूप से, कॉन्शियसली आप उसको कम करते जाएं, ताकि आपका मेडिटेशन और अच्छे से लग सके। स्वाध्याय का अर्थ तो आप जान ही सुन चुके हैं, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना। ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है कि सब में ईश्वर को देखना। हर प्राणी, हर जानवर, हर चीज में आपको ईश्वर के दर्शन होने चाहिए। जब आप ऐसे क्रिया योग का पालन करेंगे, और जब आप स्वाध्याय धर्म का भी पालन कर लेंगे, तो आप क्रिया योग का भी पालन पूरी तरीके से कर पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ पुस्तक को सुनकर, किसी दूसरों के पढ़ने के द्वारा जो वो शेयर कर रहे हैं उसको सुनकर मैं अपने स्वाध्याय धर्म को पूरा कर रहा हूं, तो आप ये गलत फहमी में हैं। जब तक के आप पुस्तक को नहीं पढ़ेंगे, तब तक के वो स्वाध्याय धर्म अधूरा रहेगा। तो आपका पुस्तक पढ़ना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। Yes. So next comes Vinaya Dharma. Vinaya Dharma, Vinaya means humble, to be modest, obedience, humbleness, modesty, obedience. It is called Vinaya. The more you have money, the more you have wealth, the more you are educated, your education, your money, your wealth leads to arrogance for anybody. But your spiritual education leads to humbleness. To be grounded, ground to earth. You are a simple person. You are always ground to earth. That means you are in Vinaya Dharma. That is your duty. For a spiritual person, to be in arrogance is adharma. If you consider yourself to be spiritual, and if you are in arrogance, then you are in adharma. So for a spiritual person, Vinaya Dharma is very important. The more you practice humbleness, simplicity, you are a simple living, and you are ground to earth. You are always ground to earth. Then you are doing your Vinaya Dharma. And the more you do meditation, the more you do Swadhyaya, the more you do Sajjana Sangatya, the more you will be in Vinaya naturally. So practicing the Vinaya Dharma consciously is very important for every spiritual seeker, because this Dharma also
refers that you are in oneness consciousness. Because you are one, you see oneness everywhere. You don't see somebody superior to you, you don't see somebody inferior to you. And no matter what you know, you are always in a space of humbleness. You don't compare yourself to another person and feel great about it. If you can do great things, then anybody can do great things. So if you can let go of your arrogance, then you are in Vinaya Dharma. The more you practice Vinaya Dharma, the more greater heights you will reach. You will journey, you will travel in your spiritual path. So this is a dharma, this is a duty. You have to do it. And when you do your dharma, then there is progress, then there is development. Every time you hear the word dharma, then you have to understand that where there is dharma, there is progress, there is development. If you want progress, if you want development in your life, then you have to be in dharma. If you are in adharma, then your life is stagnant. When your life is stagnant, then there is suffering. There is no progress in your life. Okay, ma'am. सर ने कहा है कि अगला है विनया धर्म, अर्थात विनय मतलब हम्बल, आज्ञाकारी या जो बहुत ही, मुझे सर वो वर्ड नहीं आ रहा है, विनम्र हम लोग कहते हैं, वैसा बनना। तो जितना आपके पास पैसा है, जितने आप एजुकेटेड हो जाते हो, उतना ही आपके में अहंकार आता है। पर स्पिरिचुअल एजुकेशन, हाँ स्पिरिचुअल, पर आध्यात्मिक शिक्षा में आपका हम्बलनेस मतलब आपका बहुत ही विनम्र होना और आपका जमीन पर पैरों पर रखना, आपको एक सिंपल पर्सन के समान जीना, वो आपके विनय धर्म को परिभाषित करता है। किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति को अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर अहंकार है तो वो अधर्म कर रहा है। स्पिरिचुअल पर्सन को बहुत ही विनम्र रहना चाहिए, बहुत ही अपना सादगी जीवन जीना चाहिए और अपने विनय धर्म को हमेशा फॉलो करते रहना चाहिए। जितना ज्यादा आप मेडिटेशन करेंगे, जितना स्वाध्याय करेंगे, जितना सज्जन सांगत्य होते जाएगा, उतना ही आपके विनय धर्म बढ़ते जाएगा। इसका अभ्यास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर ध्यानियों के लिए और जो ट्रूथ सीकर हैं। इसका अर्थ है कि ये आपको वननेस कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाता है कि कोई भी हमसे बड़ा नहीं है, कोई भी हमसे नीचे नहीं है, हम सभी एक बराबर हैं। अगर तुम महान कार्य कर रहे हो तो ये मत सोचो कि कोई और नहीं कर सकता, कोई भी कर सकता है। तो जितना ज्यादा आप विनय धर्म का पालन करेंगे, उतने ही अपने आध्यात्मिक राह पर ऊंचाइयों को, ऊंचे शिखर को पाएंगे। तो ये धर्म को आपको पालन करना ही है। जब आप इस धर्म का पालन करेंगे तो आपकी प्रगति तेज हो जाएगी। जहां भी धर्म का पालन किया जाता है वहां प्रगति निश्चित होती है, और अगर कोई अधर्म में रहता है तो उसके जीवन में रुकावटें आ जाती हैं, जीवन रुक सा जाता है और प्रगति नहीं होती है। So the final dharma is dana dharma. You have to share whatever the resources you have to always share with others. The sharing is very important. In every major religion, they emphasize on dana. The more you share your resources, the more you become abundant. In fact, the very abundance comes into your life only when you know how to share. This is your duty, dana dharma. There is no choice for you. You have to share. While you are earning money, you not only earn money for yourself and your family, you are earning money for the welfare of others, for the welfare of the society. So you should put aside a percentage of your earning
for the welfare of others also, along with yourself, along with your self-welfare, along with your family welfare. You should also put aside a portion of your earnings for the welfare of the society, for the welfare of the others, for the welfare of the well-being of others, humans, animals, environment, anything for the welfare of others. This is your duty. This is everybody's duty. This is Dana Dharma. For example, you are a music teacher or you know music. So teach music to others. You share whatever you have. If you are a teacher, then teach to the poor students who cannot afford tuition. Whatever you need for your earnings to feed your body, that much money you earn. Rest of the time, you be in service. Always be in service. Service, service, service. You have to dedicate your lifetime to service. The more you dedicate your lifetime to service, the more naturally you are in joy. The real joy comes only in service. Giving whatever you have, tan, man, dhan. Tan means bodily effort, physical bodily effort, like shramadhan. You use your body to serve others. That is tan. Man means your buddhi. You teach meditation to others. You take wisdom sessions. You do counseling. You guide the youth. You guide the children. You guide the people who are in need to understand what is life, what is karma, what is dharma. Whatever you know, you teach. You share your knowledge, your wisdom to another person. That is man. Dhan means money. If you have excess resources, whatever the resources you need, you keep it. The excess resource, you should always share it. So this is Dana Dharma. Tan, man, dhan. You should always share it with others. Whatever is needed for you, you keep it. The excess, you share it. The more you share, the more you receive. That's when you get into abundance. And when I say Dana Dharma, there is no choice. Some people think when I have excess money, then only I will do sharing. No. Whatever you can, you may not be able to share the money, but tan and man, you can. Either you can do dana in terms of tan, in terms of man, or in terms of dhan, or all the three. Whatever is possible, you should always do it. This is Dana Dharma. आखिरी और बहुत ही सुंदर धर्म के बारे में सर चर्चा कर रहे हैं कि दान धर्म ये आपको देना सिखाता है कि जो भी आपके पास है वो आप बांटिए। हर धर्म में दान का बहुत महत्व बताया गया है। तो आप जितना ज्यादा बांटते जाएंगे उतना ही एबंडेंस अर्थात प्रचुरता में रहेंगे। एबंडेंस तभी आता है जब आप बांटना जानते हो। मान लीजिए आप बहुत धन कमा रहे हैं तो आप अपने लिए ही नहीं पर अपने सोसाइटी के कल्याण के लिए भी कमा रहे हैं। तो हमेशा उसमें से थोड़ा सा हिस्सा अपने जरूरत को के अलावा उसमें से थोड़ा सा हिस्सा दूसरों के लिए भी आपको रखना चाहिए ताकि दूसरों की भलाई हो, प्राणियों की, कोई भी किसी के लिए भी हम दूसरों के कल्याण के लिए जब देते हैं तो हम उसे दान धर्म करते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप कोई म्यूजिक टीचर हैं या कोई टीचर हैं तो आप जब पढ़ा रही हैं या म्यूजिक सिखा रही हैं तो आप अपने आजीविका के लिए आप बिल्कुल फीस लेकर उनको चार्ज करके अपने लिए पूंजी इकट्ठी कर सकते हैं। पर आपको गरीब बच्चों को म्यूजिक या पढ़ाई की में सहायता देके उनकी भी मदद करना चाहिए। तो अपने लिए आजीविका कमाना बुरा नहीं है पर जितना हो सके बाकी समय अपने अर्निंग के अलावा आप अपना बाकी समय सर्विस के पीछे ही लगाइए। सेवा सेवा सेवा।
जितना आपके जीवन में सेवा के लिए आप समर्पित रहेंगे, उतना ही आप अपने जीवन को एंजॉय कर पाएंगे। असली खुशी तभी मिलती है जब हम सेवा में रहते हैं। और हमें क्या क्या बांटना चाहिए? तो तन, मन, धन। तन का अर्थ होता है श्रमदान। श्रमदान अर्थात आप जब शारीरिक रूप से किसी की मदद करते हैं, किसी को हेल्प करते हैं, तो उसे हम श्रमदान करते कहते हैं। मन के द्वारा किस तरीके से सेवा की जाती है? आप मेडिटेशन सिखा सकते हैं, आप अच्छे ज्ञान के सत्र ले सकते हैं, आप बच्चों को, जवान बच्चों को, किसी को भी आप मेडिटेशन सिखाइए, उन्हें मार्गदर्शन दीजिए, उन्हें समझाइए कि जीवन क्या है, कर्म क्या है, धर्म क्या है। इसके द्वारा हम मन के द्वारा इसकी सेवा कर सकते हैं, सेवा में आ सकते हैं। और धन के बारे में तो आप जानते ही हैं कि जो भी आप कमा रहे हैं उसमें से आप बांटना सीखिए। अपने लिए आप अवश्य रखिए, पर आप बांटिए। हो सकता है कि दान धर्म आप सभी के लिए बहुत जरूरी है, और ये कोई चुनाव नहीं है, ये आपका धर्म है जिसे हर एक को निभाना है। हो सकता है कि आपको लगे कि मैं धन नहीं कमा रहा हूं इतना कि मेरी जरूरतें ही पूरी नहीं हो रही है, तो मैं कैसे दान करूं। अगर आपके पास धन दान करने के लिए नहीं है, तो आपके पास तन और मन तो है। तो जो भी आप दे सकते हैं, तन के द्वारा या मन के द्वारा, पर आप दीजिए। और यदि आप तीनों प्रकार के दान कर सकते हैं तो वो सर्वोच्च है, पर जो भी आपके पास है उसे बांटना सीखिए। Okay, friends, I think we have completed the different types of dharmas, and the very idea that I gave this different dharmas, I spoke about it, is for you to practice it in your everyday life. The more you are practicing it, the more you will be in saubhagya, happiness, wellness, comfort, peace. Basically, your life becomes a celebration. So if you can follow these dharmas in your day-to-day life, you are heading towards enlightenment. When I use the word enlightenment, that means you are realizing your true potential. You are radiating your true potential, right? And it's a very important subject. Truth has to be heard again and again and again. Sometimes we hear something, we feel we understood it, but unless we put the things what we heard in our day-to-day life in practice, unless you put the things whatever you learned in practice, you have never learned it. So it is very important what you learn, you put it in practice. It is very, very important. If you don't put it in practice, then you become a hypocrite. You speak something, but you do something else. That's not the right way. You should be a right example. You know, if you want to be an inspiration to your family members, if you want to be an inspiration to your society, you have to put in practice whatever you learn. When you put in practice, when you live your truth, when you practice your truth, then you become the right example for another person. You become an inspiration by default to all your family members. But you are learning theoretically, but if you are not putting in practice, that is also a dharma. Because seeing you, your family members, your colleagues will demotivate it to do meditation. Because this person he's saying he's a meditator, but his thinking is negative. His actions are negative. His words are negative. So what kind of meditation is doing? So it is a great responsibility. As a meditator, we all have to do our dharma. So please put whatever you can put in action, you put in action. And only what you have implemented in your life, that you teach to others. So this is very important of integrating. Thank you very much. We'll see you tomorrow. Namaste to all. सर कल सर धर्मा का ही और एक्सटेंड करेंगे ना सर? सस्पेंस मैडम। सर मैं नहीं कह रही हूँ सर, बाकी लोग कह रहे थे कि प्लीज रिक्वेस्ट करिए सर को थोड़ा सा 1-2 दिन बढ़ा दें। Tomorrow day after we will take questions and we will do integration. Okay, madam. Thank you. So I conclude the Dharma topic today. Tomorrow and day after
it will be more of integration regarding these 11 days. How was your journaling? How was your meditation 3 times a day? And how was your mindfulness? So I want to hear from the people also, their experiences and any questions related to it. And any questions related to what all we spoke from the day one. Okay. Thank you very much. तो संगीता जी आपको सर से पूछना है, सर आज क्वेश्चन सर एक हैंड रेज है। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर ने कंक्लूड किया है कि जो भी मैं इतने दिनों से आपको धर्म के बारे में बता रहा हूँ, आप सबको अच्छे से समझिए और अपने जीवन में पालन करिए, तभी आपका जीवन एक उत्सव हो जाएगा। इसी रोजमर्रा की लाइफ में सभी धर्म का हमें ख्याल रखकर पालन करते रहना है। मैं आप लोगों को एनलाइटनमेंट के प्रति प्रेरित कर रहा हूँ। एनलाइटन होना का अर्थ है कि आप अपने वास्तविक क्षमताओं को आप रेडिएट कर पाएंगे। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि सत्य जितने बार बोला जाता है उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। क्योंकि जब तक कि आप रोजमर्रा के जीवन में इसका पालन नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। सिर्फ सुनना ही, अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं और उसी का पालन नहीं कर रहे हैं तो आप एक पाखंडी हैं। तो जो आप बोल रहे हैं कि हाँ मैं समझ गया और मैं करता हूं, तो आपको वो सभी चीजें अपने जीवन में करते रहना चाहिए। आप अपनी फैमिली के लिए और समाज के लिए एक उदाहरण के रूप में बनिए कि जो भी आप सत्य बोल रहे हैं और सत्य को अपने जीवन में उतार रहे हैं, उन सब के लिए एक आप उदाहरण बनिए। सिर्फ सैद्धांतिक रूप से सीखना, थियोरेटिकली हम जब सीखते हैं और उसका पालन नहीं करते हैं तो वो भी अधर्मा है। तो जो भी मैंने अभी तक के आप लोगों को बताया है, आप ध्यानी हैं, तो अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं और आपको कोई लोग आकर डिस्टर्ब कर रहे हैं और आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं कि आप ये सब फालतू चीजें कर रहे हैं, तो आप अपने मन में दोहराइए कि ये उनकी राय है, आप उनके बातों पे बिल्कुल मत आइए। आप अपने धर्म का पालन करिए और मेडिटेशन में ही ध्यान दीजिए। दूसरों के कारण अपने मेडिटेशन को भंग मत होने दीजिए। तो जो भी आप सीख रहे हैं उसको कार्य रूप में, एक्शन के रूप में आपको करना है, अर्थात पालन करना है। उसे ही मैं समझाने के लिए आप लोगों को बार बार आगाह कर रहा हूं। तो आप सभी धर्म को पालन करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स। तो सर ने बहुत ही प्यारा सुंदर टॉपिक लिया है, धर्म का बहुत सुंदर है। देखा जाए तो वाकई धर्म अगर हम समझें तो कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सबसे डिफिकल्ट है अपनी व्यर्थ की इच्छाओं को कंट्रोल करना, यानी कि उस पर ध्यान नहीं देना। तो थैंक यू फ्रेंड्स। और यस प्रियंका, पूजा कुछ बोलना चाह रहे हो? मीता जी, लिपिका जी के 2-3 क्वेश्चंस आए हैं चैट में, मेनली रिलेटेड टू माइक्रोवेविंग फूड। तो बताइए क्या है। आप उन्हें आंसर कर सकती हैं। वो कह रही थी कि लिपिका जी अगर आप हैं तो आप पूछ सकती हैं। If you're in the chat, please raise your hand. Okay, I'll tell you. The first question was, वो पूछ रही थी कि माइक्रोवेव में क्या खाना कुक भी नहीं करें, क्योंकि सर ने बोला था कि माइक्रोवेव नहीं, खाना कुक करने की तो बात दूर, वो गर्म भी करने के लिए मना करते हैं। तो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, मतलब उसका और ना गर्म करके खाना है। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने बोला कि कुछ लोग तो कहते हैं कि गैस पे भी मत बनाओ। अब गैस पे नहीं बनाएंगे तो कहाँ से चूल्हा वगैरह इस दुनिया में पॉसिबल है? अगर पॉल्यूशन फैलाओगे तो आपकी सोसाइटी आपको अरेस्ट कर लेगी कि आप घर में कोयला जला रहे हो। तो इतना आप डीप में मत जाइए, गैस पे पकाइए। और माइक्रोवेव की एनर्जी जो रहती है, माइक्रोवेव की जो वो रहती है, वो वाकई उसके फूड की प्राणा एनर्जी को डिस्ट्रॉय करती है। तो बार बार मना किया जाता है। माइक्रोवेव, मशरूम, गार्लिक,
इन सबको नहीं खाना है। नॉनवेज, ये सब चीजें आपको मालूम है। माइक्रोवेव के साथ साथ आपको मशरूम पे भी ध्यान देना है कि उसे नहीं खाना है, क्योंकि वो डेड मटेरियल के ऊपर अपनी लाइफ को जीवन यापन करता है। वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अर्थात प्राणा शक्ति के द्वारा अपना खाना नहीं बनाता, डेड मटेरियल पे वो पनपता है। तो उसमें जो भी एनर्जी होती है वो नेगेटिव ही रहेगी, पॉजिटिव नहीं रहेगी। और मशरूम को भी नहीं खाना चाहिए। जबकि देखिए उसमें भी इतने मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाता है कि वो हाई प्रोटीन है, तो वेजिटेरियन लोग के लिए तो बहुत जरूरी है मशरूम, पर मशरूम भी नहीं खाना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल से और किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं चाह रही हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग इस इतने प्यारे टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझिए, और एक दिन हम बिल्कुल एक ओपन प्लेटफॉर्म रखेंगे ताकि हम इसमें धर्मा और खासकर डिजायर के ऊपर हम जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि डिजायर का भी एपिसोड फिर से हमको देखना चाहिए। अभी धर्मा के कारण वो थोड़ा सा डिजायर वाला दिमाग से थोड़ा हल्का हो जाता है ना, फीका पड़ जाता है। फिर से उसे एक बार पढ़ के उसके नोट्स बनाने चाहिए। मैं आप लोग को डेट अनाउंस कर दूंगी कि इस दिन हम सब लोग इसके ऊपर डिबेट करेंगे, तो वो हमारे लिए ही अच्छा होगा, हम सब के लिए ही। ऐसे ही एक दिन मैं डिबेट रखूंगी कार्लोस कास्टानेडा की बुक का फायर फ्रॉम विदिन। यस यूजर्स आईफोन। नमस्ते नीता जी, मैं बहुत नमस्ते। आभारी हूँ आपके लिए, इसलिए मैं आपको बताना चाहती थी। और मैंने पहली बार ज्ञान भारत ज्वाइन किया है, और इवन सुबह 3:30 बजे भी उठना पड़ता है इसके लिए मुझे, कभी 3 बजे। तो मैं उठने आप कहाँ को रहती तैयार हैं मैम? रहती हूँ। मैं एडमिंटन कनाडा से बोल रही हूँ। अच्छा। तो बड़ा चैलेंजिंग है मेरे लिए, लेकिन सफलता मिल रही है थोड़ी बहुत। तो मैं आपको ये अपनी तरफ से आभार प्रकट करना चाहती थी। और हम ज्ञान भारत से जुड़े नहीं हैं, तो हमारे पास कोई नंबर्स नहीं हैं जिसमें कि आप हाँ, बता रहे हैं, जिसके बारे में थोड़ा आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, हम लोग आपको ऐड कर लेंगे। और जो भी फ्रेंड्स अभी यहाँ पर हैं और उन्होंने नहीं ज्ञान भारत में व्हाट्सएप ग्रुप में है, तो आप लोग चैट बॉक्स में नंबर लिख लीजिए, हम लोग ऐड कर लेंगे। और YouTube वाले फ्रेंड्स को याद दिला दूं कि मैं रोज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर डालती हूँ, जिसमें आपको सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज करना है, फोन नहीं करना है। आप YouTube फ्रेंड्स भी उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखकर आप डाल दीजिएगा, तो हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, मैं कर दूंगी। और दूसरा ये था कि जैसे हाँ, हम लोगों के लिए जो काम करने वाले लोग हैं, और 3 घंटे की जो बात आती है थोड़ी चैलेंजिंग हो जाती है, तो उसके लिए कोई 3 और घंटे खाना बनाना जो उसके बाद नहीं खाना चाहिए और फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, वो पर थोड़ा एक्चुअली चैलेंजिंग होता है वही, देखा जाए तो है, पर अब उसका फैसला तो आप ही कर सकती हैं मैडम। वेल, ट्रुथ कोशिश बताएं। अगर प्रदीप जी से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सो दैट इज इट। बट आप क्योंकि रहते हैं हिंदुस्तान में, तो वो पॉसिबिलिटी कई चीजों की है जो हम लोगों को कई बार नहीं मिल पाती है। बट आई थिंक वी हैव टू फाइंड सम ways, I guess. एंड दूसरा ये था कि आप रायपुर में हैं, तो वहां पर हम लोग कभी यात्रा करते हैं तो आपसे मुलाकात हो सकती है। कुछ बिल्कुल, आप फ्रेंड्स रायपुर आते हैं? नहीं, हम कभी आए नहीं, लेकिन इच्छा बहुत है, क्योंकि प्रदीप जी ने वहाँ के जो फॉरेस्ट है उनके बारे में बोला है, आदिवासियों के बारे में, अच्छा अच्छा अच्छा, बस्तर। बस्तर के बारे में। यस यस यस, बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए। तो आपसे कोई हमारे पास कोई संपर्क नहीं है, तो वो कैसे मिलेगा आपसे? आप मेरे ग्रुप में आ जाएंगे तो मेरे साथ हमेशा आप पूरे से मैं 24 घंटे ठीक है, कनेक्टेड ही रहेंगे, है ना। मैं ग्रुप ठीक है, में ठीक है। रहती ही हूँ, हर ग्रुप में हूँ, तो बिल्कुल आपको हर चीज मिल जाएगी, है ना। नहीं, आपके जो ऑरा है वो बहुत प्रभावशाली है, ये बात भी मैं आपसे कहना चाहती थी। और मुझे खुशी है कि मुझे मौका मिल पाया, और बहुत रेडिएट होता है और बहुत इंस्पायरिंग है, तो बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली जब क्या हम है, प्रदीप सर बोलते हैं अगर आपकी आंखों में खूबसूरती है ना, तो आपको खूबसूरत ही दिखेंगे।
बाकी मैं भी आप लोग के समान मैडम सिर्फ एक ऑर्डिनरी मेडिटेटर ही हूँ, है ना, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। वो आप लोग का मेरे प्रति प्यार है। नहीं, आपकी सिंपलिसिटी है, इससे मालूम पड़ता है आप कितनी हम्बल हैं। पर ये आई नो द आपके अंदर है कुछ, तभी उसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद आपको हृदय से। और देखिए कभी मौका मिलेगा तो जरूर आपसे मुलाकात करेंगे ग्रुप के साथ। थैंक यू। आपका तो नाम क्या बताया आपने? बरिया। बढ़िया। अच्छा, आप भी अपना नंबर डाल दीजिए क्योंकि 2 के तो मैंने स्क्रीन। हाँ, मैं डालती हूँ। I'll just put it in the chat. Yes. पुण्यम, पूजा, तुम नंबर सेव कर रहे हो क्या? हाँ, मैंने सबके नंबर ले लिए। I've taken numbers also। क्वेश्चंस जो भी आते हैं चैट में, जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस है वो मैंने सब ऐड कर दिए हैं। वो रिफ्रेम करके हम उन्हें भेज देंगे सबको। हाँ, तो आज के जो नंबर है ना वो सब उनको भेज देना, मेरे को भेज देना, तो या मैं आपको बता दूंगी किसको भेजना है ना। तो वही काम संभाल रहे हैं तो वही ऐड करते जाएं, और उनको मालूम है मेरे इंस्ट्रक्शन, तो वो ऐड कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बरिया जी बहुत अच्छा लगा, हमारी स्पिरिचुअल फैमिली में आप आए, मोस्ट वेलकम। हम चाहेंगे कि आप जब भी टाइम आपको मिले तो बिल्कुल लाइव जूम सेशन में जुड़िए, और किसी कारणवश से आप नहीं जुड़ सकते हैं तो यूट्यूब की लिंक तो आपको रोज प्रोवाइड हो ही जाएगी, तो आप कभी और भी देख लीजिएगा, है ना। Once again, much gratitude to you also. Thank you and thank you. Thank you. तो चलिए फ्रेंड्स, कल मेरे ख्याल से सर क्वेश्चन आंसर्स ही लेंगे, तो हम लोग काफी क्वेश्चन आंसर्स की लिस्ट बनाए हुए हैं, तो कल सवेरे तक के और हम क्वेश्चंस लेंगे और सर के पास भेजेंगे। कल के बाद प्लीज आप लोग क्वेश्चन मत भेजिएगा, और जो रिट्रीट में पार्टिसिपेट करना चाहता है, जाना चाहता है बेंगलुरु, वो भी कल या परसों शाम तक के हमको जरूर से बता दे, फिर ताकि हम एक फाइनल लिस्ट बना के भेज सके बेंगलुरु के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए कल मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर।